हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो जहाँ पे हम फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसका डेरिवेशन यहाँ पे ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं विद इन 3 minutes. So it's basically the problem of a rotating cylinder. So we have a liquid filled in a cylinder, and once we rotate it about its axis of symmetry, वो omega velocity से rotate कर रहा है, तो it will form a parabolic shape or a paraboloid in 3D. तो ये जो पैराबोलॉइड है उसकी जो इक्वेशन है, हाउ डू वी फाइंड दैट इक्वेशन, हाउ डू वी गेट दिस थिंग कॉल्ड द एच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g जो हमें सिर्फ रट्टा मार देता है. So it has been clearly derived in this video. What we have to do is to surface है, we assume that it forms a surface like this, and your surface पे we take a very small particle called point A. Let's इसे A मान लेते हैं, let this point be A, and we give that a mass of dm because it's very small. तो ये जो dm मास है उस पे हमें सारे फोर्स इक्वेट करने पड़ेंगे जो हमने यहाँ पे किए हैं. So this dm mass, उस पे क्या क्या फोर्स लग सकते हैं? So it will have a horizontal force, which will be the centripetal force, which is dm omega square r, and there will be a gravitational force which will be dmg. अब ये दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट करेंगे अलोंग द tangent ऑफ द कर्व. तो हम ये tangent ले लेते हैं एंड अज्यूम दिस टू बी एंगल थीटा. तो हमें यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वेट करने पे ये इक्वेशन आता है, द इक्वेशन हियर विच विल बी डी एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा, where x is basically the radius from the axis of symmetry. If we consider this point as the origin, so we can clearly take this axis x direction and this as the y direction. तो हम अगर random point पे x and y points पे अगर equation find करना है तो हम यहाँ से उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. वी फाइंड दिस इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी इज इक्वल टू टैन थीटा, एंड टैन थीटा को डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं. उसके बाद इंटीग्रेट करने पे वी गेट दिस फाइनल इक्वेशन हियर विच इज वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. और अगर हमें फाइनली ये हाइट ढूंढनी है जो यहाँ पे ढूंढ के रखी है, तो वो हाइट हो जाएगी एट डिस्टेंस आर. तो एक्स को आर पुट करने पे हमें ये फाइनल हाइट आ जाती है. इस प्रॉब्लम से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल और बन सकते हैं. दे कैन रैंडमली आस्क यू व्हाट इज द प्रेशर एट अ रैंडम पॉइंट समवेयर एट डिस्टेंस x1 and height y1 from the base. एंड ये सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है इफ़ यू नो फॉर अ फैक्ट कि ये हाइट कैसे निकाल सकते हैं. एंड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हर पॉइंट जो एक पैरेलल फॉर्म करता है ऊपर के कर्व से, दे विल हैव द सेम प्रेशर. सो एवरी पॉइंट हियर विल फॉलो सेम प्रेशर, every point on this line will follow same pressure, every point on this line will also follow same pressure. And it is very easy if you can find the pressure at this point, क्योंकि यहाँ पे because of the centripetal force the acceleration is zero. So सारा का सारा gravitation की वजह से प्रेशर होगा जो रो जी एच से हम लिख सकते हैं. एक बार यहाँ पे आ गया हमें हमारा प्रेशर, सो वी कैन फाइंड इट ऑन एवरी पॉइंट दैट फॉलोज दिस कर्व. तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे जेई एडवांस एंड जेई मेंस दोनों में सवाल बन सकता है. And that's all for today's video. थैंक यू सो मच. इफ़ अगर इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे इसके रिलेटेड हमने 2-3 सवाल सॉल्व किए हैं, स्पेशली फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, बिकॉज इससे बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्शुअल और डिफ़िकल्ट सवाल बन सकते हैं where there are a lot of cases where there is spillage, where the height of the parabola can be greater than the height of the cylinder itself. उस केस में क्या होगा, वो सारे केसेस हमने डिस्कस किए हैं हमारे वीडियोस में. So please go and check it out. Thank you so much.